सभी का स्वागत है कंपटीशन पत्रिका पे। आज लेक्चर सेकंड है इंग्लिश वोकैब का। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वोकैब। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एस्क्यू। एस्क्यू का अर्थ होता है किसी चीज़ से परहेज रखना, टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली और टू गिव अप समथिंग। सिनोनिम से फॉरगो, सुन। इंटरनेम से एंगेज और पार्टेक। An example is, as an environmentalist, I always eschew single-use plastic and opt for reusable containers to reduce waste. वहाँ सेकंड वर्ड है वेहेमेंस। वेहेमेंस का अर्थ है जोश, द फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सिनोनिम से vigour, fervour। एंटोनिम से apathy, lethargy। एग्जाम्पल, she argued with such vehemence against the proposal that they decide to abandon it. हमारा थर्ड वर्ड है रिबफ्ड। रिबफ्ड का अर्थ है अस्वीकार कर दिया, किसी चीज को अस्वीकार कर देना। रिफ्यूज अ फ्रेंडली ऑफर, रिक्वेस्ट और सजेशन इन एन अनकाइंड वे। सिनोनिम से हमारा रिजेक्टेड या रिप्यूटेड। एंटोनिम से वेलकम या एक्नॉलेज। एग्जाम्पल से रिबफ्ड और सजेशंस दैट शी शुड रिजाइन। फोर्थ वर्ड है हमारा परपर्टेड। परपर्टेड का अर्थ होता है कोई बात कथित, अपेयरिंग और स्टेट टू बी ट्रू तो नॉट नेसेसरी सो, कथित रूप से बोलना। अलेज्ड, ऑस्टेंसिबल। एंटोनिम से प्रोवन, फैक्चुअल। एग्जाम्पल, अ रिसेंट स्टडी into the purported health benefit of the drink was not conclusive. फिफ्थ वर्ड है हमारा फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड मतलब झूठ बनाना, किसी झूठी बातों को हम लोग इमेजिनरी रूप से तैयार करके उसको फिर बताना। इन्वेंटेड और प्रोड्यूस समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव। सिनोनिम से फाल्सिफाइड, फिएंड। एंटोनिम से फेस, कन्फ्रंटेड। एग्जाम्पल, ही वॉज लेट सो ही फैब्रिकेटेड एन एक्सक्यूज टू अवॉइड ट्रबल। सिक्स वर्ड है गोडेड। गोडेड का अर्थ होता है उकसाना, किसी चीज को उकसाना। मेड अ पर्सन और एन एनिमल रिएक्ट और डू समथिंग बाय continuously annoying or upsetting them. Synonym से provoked, incited. Antonym से dissuaded, discouraged. Example is, she determined to goad him into a fight. सेवंथ है मलाइन। मलाइन मतलब है किसी को बदनाम करना, किसी को खराब करना। टू से bad thing about someone or something publicly. It's synonym से slender, vilify. Antonym से exalt, extol. Example, she feels she has been much maligned by the press. एट वर्ड है viable। viable का अर्थ है साध्य, able to work as intent or able to succeed। सिनोनिम से feasible, attainable। एंटोनिम से improbable, impossible। Example, the rescue team worked tirelessly to find a viable route to reach the stranded climbers on the treacherous mountain। नाइन्थ वर्ड है staggering। staggering वर्ड स्टैगरिंग वर्ड का अर्थ है चौंका देने वाला, सरप्राइज करने वाला। मीनिंग, वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। सिनोनिम से एस्टोनिशिंग, एस्टॉन्डिंग। एंटोनिम से अनरिमार्केबल, एवरीडे। एग्जाम्पल, द कंपनीज प्रॉफिट रीच्ड अ staggering amount, surpassing all previous record। ऑनरस। ऑनरस मतलब होता है कष्टदायक, involving a great deal of effort, trouble or difficulty। Synonym से strenuous, arduous। Antonym से cushy, facile।
Example of the student protested against the onerous homework assignment, arguing that they left no time for extracurricular activity and personal development. हमारा 11th वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक 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 का अर्थ होता है अदूर अदूरभावनात्मक used to describe a person, a custom, or an idea that seems old-fashioned and does not belong to the present. Syn- Synonyms से antiquated और archaic. Antonyms से contemporary और modern. Contemporary का मतलब होता है समकालीन, modern का मतलब होता है बहुत नया. Example he described the law as anachronistic and ridiculous. Next word है हमारा insouciant. Insouciant का अर्थ होता है बेफिक्र, not worrying or caring about anything. Synonyms होता है apathetic, nonchalant. Antonyms the concerned, attentive. Example is Jack's insouciant dismissal of the rules resulted in him facing disciplinary action. हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्स्पिकियस. कॉन्स्पिकियस का अर्थ है सुस्पष्ट, easy to see or notice, likely to attract attention. Synonym से obvious, evident. Antonym से obscure, concealed. Example he tried to blend in, but his unusual made him conspicuous among the locals. आज की बुक यही खत्म होता है. अब कल मिलते हैं दोस्तों.